पहला क्वेश्चन हमारे पास है द कंक्लूजन ऑफ डिडक्टिव आर्गुमेंट इज डैश. वी हैव फोर ऑप्शन. ऑप्शन ए सर्टेन, ऑप्शन बी एक्सपीरियंस, ऑप्शन सी ऑब्जर्वेशन एंड ऑप्शन डी प्रोबेबल. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए सर्टेन. अगला क्वेश्चन द रीजनिंग इन विच द गिवन स्टेटमेंट आर व्यूड एज अ सप्लाइंग स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर द ट्रूथ ऑफ द कंक्लूजन इज कॉल्ड डैश. वी हैव फोर ऑप्शन. A. Deductive reasoning, B. Inductive reasoning, C. Qualitative reasoning and D. Quantitative reasoning. The right answer is option B. इंडक्टिव रीजनिंग. इससे पहले लेक्चर में हमने पेडागोजी के रिलेटेड 50 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हमने अपलोड करके रखा हुआ है जो कि मुख्तलिफ टीचिंग के रिलेटेड टेस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आप वो भी वॉच करें और आपकी टेस्ट की सही प्रिपरेशन हो जाए. अगला क्वेश्चन है द पर्सन इज इन्फ्लुएंस कम्युनिकेशन इफ. वी हैव फोर ऑप्शन. ए ही इज अ कॉमेडियन कैरेक्टरिस्टिक, बी इफ हिज कम्युनिकेशन इज वेरी क्लियर, सी इफ ही कम्युनिकेट्स इन हिज मदर टंग, डी if he has dramatic characteristic. The right answer is option B, if his communication is very clear. अगला क्वेश्चन है जनरली स्टूडेंट लाइक दोज टीचर हु. ऑप्शन ए डिक्टेट नोट्स इन हिज क्लास, ऑप्शन बी रिमूव द डिफिकल्टीज ऑफ सब्जेक्ट, सी रिवेल्ड important question before examination, D are self-discipline. The right answer is option B, remove the difficulties of the subject. अगला क्वेश्चन child development is marked by interrelated process. Which one is not of them? We have four options. A. Differentiation, B. Motivation, C. Integration, D. Learning. The right answer is option B. Motivation. अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ क्लास क्लाइमेट यू वुड प्रेफर. वी हैव फोर ऑप्शन. ऑप्शन ए अ वेल बिहेव्ड क्लास, स्टूडेंट स्पीकिंग ओनली व्हेन आस्क्ड, बी एन एक्टिव क्लास फॉलोइंग द रूल्स prescribed by you, C a highly interactive and self-disciplined class, D a quiet and highly attentive class. The right answer is तमाम देखा जाए तो ऑप्शन हमें करेक्ट नज़र आता है बट मोस्ट इसमें अप्रोप्रिएट जो आंसर बनता है वो है ऑप्शन सी a highly interactive and self-disciplined class. अगला क्वेश्चन है डेवलपिंग न्यू रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑन द बेसिस ऑफ गिवन फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन इन मेमोरी लेवल इज कॉल्ड डैश. वी हैव फोर ऑप्शन. एसोसिएशन, ऑप्शन बी जनरलाइजेशन, ऑप्शन सी एप्लीकेशन एंड डी एसिमिलेशन. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी जनरलाइजेशन. अगला क्वेश्चन what should teacher do before teaching the lesson? We have four options. A. He should tell the answer of the lesson first. B. Lesson should be ready by student. C. He should point out the meaning of difficult words of the lesson first. D. He should tell the main objective of the lesson. वो है ऑप्शन डी, यानी कि वी शुड टेल द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन. आज के लेसन में हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव हमें सेट करनी चाहिए. अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी. वी हैव फोर ऑप्शन. ए यूज ऑफ मोटिवेशन टेक्निक्स इन द क्लास, बी construction of measuring instrument for evaluation of industrial outcomes, C comparison of performance of two different classes or schools, D selection of suitable teaching strategy. The right answer is option C comparison of performance of two different classes or school. अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस इज सर्व बाय लेसन प्लान. वी हैव फोर ऑप्शन. ए साइकोलॉजिकल टीचिंग इज पॉसिबल, बी सुइटेबल लर्निंग एनवायरनमेंट कैन बी क्रिएटेड इन अ क्लास, सी अ टीचर कैन स्टिक टू हिज कंटेंट एंड डी ऑल ऑफ एबव. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव. अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी इज मोस्ट सुइटेबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन. वी हैव फोर ऑप्शन. ए डेमोन्स्ट्रेशन, बी क्वेश्चनिंग, सी नरेशन, डी लेक्चर.
The right answer is option B, questioning. अगला क्वेश्चन, पर्पस ऑफ इवेल्युएशन फेज ऑफ टीचिंग इज डैश. वी हैव फोर ऑप्शन. ए, टू नाउ to what extent objective are realized. B, to know the shortcoming of the teacher. C, to know the effectiveness of strategy. D, all of above. The right answer is option D, all of above. अगला क्वेश्चन है, which of the best method of study of children behavior. We have four option. A, inspection method. B, interview method. C, practical method. D, personal study method. The right answer is option D, personal study method. अगला क्वेश्चन, एटीट्यूड कैन डैश. वी हैव फोर ऑप्शन. ए, be avert or convert both. B, provide basic of individual difference. C, B, the measure of cultural differentiation. D, all of above. The right answer is option D, all of above. अगला क्वेश्चन, which of the following teaching aids help the peoples to study, analyze and compare dates. We have four options. A, graphs. B, maps. C, diagram. D, picture. The right answer is option A, graph. अगला क्वेश्चन है, इवेल्युएशन अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग इज characterized on the ground that. Option A, no efforts is made of integrate different teaching points. B, it is highly structured where teacher dominates our pupil. C, it does not take individual difference or people into account. D, all of above. The right answer is option D, all of above. अगला क्वेश्चन, complexity of score of matching type of test can be reduced by. Option A, assigning only one mark of the item. B, increasing the item in two column. Option C, supplementing of the match item with 4 alternative item. Option D, none of these. The right answer is option C, supplementing the match item with 4 alternative item. अगला क्वेश्चन, guidance remove dash. We have four option. A, the personal problem of the individual. B, psychological problem of the individual. C, the social problem of the individual. D, all of the above. The right answer is option D, all of above. अगला क्वेश्चन है, 3 merit of proficiency test are dash. We have four option. Approval, reliability and subjective. B, subjectivity, dexterity and approval. C, approval, subjectivity and reliability. D, approval, dexterity and objectivity. The right answer is option A, approval, reliability and subjective. अगला क्वेश्चन है, गाइडेंस डिफर फ्रॉम काउंसलिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैनर. वी हैव फोर ऑप्शन. A, guidance is in a group process while counseling is a one-to-one contact. B, guidance mostly conveys social aspect while counseling is the learning oriented process and reader the learning problem of the individual. C, guidance is a broader concept than counseling. The right answer is option D, all of the above. अगला क्वेश्चन है, which when a child responds to all women who wear black suit because of the black suit of her mother, it is the example of dash. We have four option. Internet, inhibition. B, generalization. C, assimilation and D, all of the above. The right answer is option B, generalization. आज की वीडियो में इतना ही. इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू रखेंगे.